यू नो वुमेन्स आर वेरी पावरफुल एंड हेंस दे आर इन एचआर. आपके घर पे भी आपको मदर देखते हो, सबसे पावरफुल वो है. दे हैव इमोशंस बट दे हैव डिसिप्लिन. और यही एक एचआर की इम्पोर्टेंस है, तो जो उनके पास नेचुरली है. राइट. अकॉर्डिंग टू यू, राइट, व्हाट आर द 3 मेजर फैक्टर्स जो हायरिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होता है टू बिल्ड अ गुड कंपनी कल्चर? टैलेंट एक्विजिशन, हायरिंग, हम जो भी टर्म यूज़ करें, राइट, बहुत इंपॉर्टेंट. इट्स अ फाउंडेशन कोई भी कंपनी के लिए. मतलब एक गलत हायर और हमारी कंपनी गारंटी 10 बरस पीछे जाएगी. सो इंश्योर एक राइट हायर हो रहा है. वेलकम बैक टू द लास्ट लाफ पॉडकास्ट. फोक्स, आई एम रियली हैप्पी बिकॉज आपने हमारे प्रीवियस पॉडकास्ट को बहुत ही ज़्यादा पसंद किया है. थैंक यू सो मच कि आपने इतना प्यार और सपोर्ट दिया. एंड दिस हैज़ रियली मोटिवेटेड मी कि मैं और बढ़िया कंटेंट आपको डिलीवर कर पाऊँ. हमारे आज के गेस्ट बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है बिकॉज इन्होंने सिर्फ 2 अरसा नहीं बट ऑलमोस्ट अपनी पूरी जिंदगी एक डोमेन नॉलेज में बिता दी. हमने आज मिस्टर ध्वनि मेहता से बहुत ही इंटरेस्टिंग एचआर रिलेटेड क्वेश्चंस किए हैं और हमने ये भी आइडेंटिफाई किया कि एआई कैसे एचआर डोमेन को डिसरप्ट कर रहा है. इवेंचुअली यू नो द आंसर्स आर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. हमने 3 चीज़ों पे बात की है. सबसे पहले हमने ये क्वेश्चन को आंसर किया है कि व्हाई एचआर इज वुमेन सेंट्रिक. दूसरा, हमने बहुत सारे एआई एचआर टूल्स के बारे में बात किया है और कौन से टूल्स एज अ अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स को यूज करने चाहिए और कैसे वो अफोर्ड कर पाएंगे फॉर द फंक्शन ऑफ टैलेंट एक्विजिशन. और तीसरा, हमने बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ों पे बात की है. वर्क फ्रॉम होम वर्सेस वर्क फ्रॉम ऑफिस. दूसरा, कितने आवर्स का वर्क शिफ्ट होना चाहिए. और तीसरा, इंडिया में क्या ओवर टाइम लेना पॉसिबल है. एंड गेस व्हाट, आपको सिर्फ एआई के डोमेन के बारे में नहीं बट एचआर के डोमेन के बारे में भी बहुत कुछ पता चलेगा. फोक्स, जिन्हें भी अपना करियर एचआर में परस्यू करना है, दिस इज द राइट पॉडकास्ट फॉर यू बिकॉज यू विल लर्न अ लॉट. लेट्स मीट ध्वनि मेहता, who has been awarded by Tally for his services in HRMS for small medium enterprises. If you are one, this podcast is for you. Before you guys watch the show, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं so that you get quality content on your phone. अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब मी राइट नाउ एंड एंजॉय द शो. ग्रेट. तो बताओ आप कि व्हाट इज द कंपनी कल्चर और स्टार्टअप में कल्चर बिठाना कितना ज़रूरी है? कंपनी कल्चर बहुत इंटरेस्टिंग है. जब एचआर और ऑर्गेनाइजेशन की हम बात कर रहे हैं तो मोस्ट ऑफ द लोग कंपनी कल्चर मतलब ये समझते हैं कि हम कस्टमर सेंट्रिक है. तो दैट्स नॉट कंपनी कल्चर. कंपनी कल्चर शुरू होता है पहले तो अपना एक बिजनेस ओनर के डीएनए से, कि उसका डीएनए क्या है, वो क्या सोचता है, उसकी फिलॉसफी क्या है, उसकी एपैथी कैसी है. ओके, वो यहाँ से शुरू होता है. फिर एक इंपॉर्टेंट टेक अवे है जो हमको राइट हायरिंग करना है, सेम माइंडसेट के लोगों को हायर करना है. तो ये बहुत बार कंपनी में नहीं होता है और फिर कंपनी स्ट्रगल करती है कल्चर सेट करने में. तो ये इम्पॉर्टेंट है. अभी कंपनी कल्चर क्यों इम्पॉर्टेंट है, उसका एक एंगल लेते हैं बिजनेस से, क्योंकि हम बिजनेस की बात कर रहे हैं, राइट. तो हम जब कस्टमर को एक्वायर करते हैं, हम कस्टमर को सर्विस करते हैं, राइट, तो हम क्या थॉट से करते हैं, हमारे इंटेंशंस क्या है, हम क्या नेचर से करना चाहते हैं, ये सब आपके कल्चर से आता है. ये हम कुछ बोर्ड पे गोल्स और मिशन विजन लिख देते हैं, उससे नहीं आता है. ये प्रैक्टिस करने से आता है और ये प्रैक्टिस सिखाई नहीं जा सकती है. तो ये कल्चर थोड़ा बिल्ड होके आता है. पहला पुश वो होता है प्रमोटर से ही, और उसके बाद उसके की लोग कौन है, उसके नीचे उसकी टीम क्या है. इनफैक्ट अगर आप आइडेंटिफाई करेंगे तो आपको ये भी समझेगा कि आपके जो क्लाइंट्स भी है ना, उसका कल्चर भी मोरलेस आपके साथ मैच हो रहा है. और वही कल्चर के लोग आपके साथ ज़्यादा काम करते हैं. मतलब आप ये नहीं देखोगे कि आप बहुत सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज कंपनी है आप एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हो, आप नहीं कर पाओगे. ओके, क्योंकि वहाँ पे वो कल्चर नहीं सेट होता है, हम वो वेवलेंथ पे ही नहीं काम कर पाते हैं. सो कंपनी कल्चर मेरे हिसाब से बहुत क्रिटिकल है. और स्टार्टअप के लिए तो आई थिंक सो पूरा कल्चर से ही ग्रो करना है. मतलब बेस्ट पार्ट है उनको तो चांस मिल रहा है. मोस्ट ऑफ द केसेस में पहले कंपनी ग्रो होती है और फिर डिसाइड करते हैं कल्चर कैसे बनेगा. यहाँ तो चांस मिल रहा है, तो कंपनी कल्चर से ही शुरू करोगे. आपका टारगेट ऑडियंस जो सेल्स में बोलते हैं वो क्लियर रहेगा, आपका हायरिंग क्लियर रहेगा, हमको किस टाइप के लोग हायर करने हैं. सो कंपनी कल्चर मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए. सो आई एम गोइंग इन डेप्थ मोर, मुझे थोड़ा और अंदर जाना है. एंड अगर कोई भी स्टार्टअप चालू कर रहा है आज, व्हाट वुड बी द 3 मेजर हायरिंग फैक्टर्स
जिससे एक कल्चर बना रहे कंपनी में, and eventually we'll talk about which is going in edtech industry, right? So we'll talk about this. That would be my next question. But I want to know कि according to you, right, what are the 3 major factors जो hiring में बहुत important होते हैं to build a good company culture? टैलेंट एक्विजिशन, हायरिंग, हम जो भी टर्म यूज़ करें, राइट, बहुत इंपॉर्टेंट, इट्स अ फाउंडेशन कोई भी कंपनी के लिए. मतलब एक गलत हायर और हमारी कंपनी गारंटी 10 बरस पीछे जाएगी. सो इंश्योर एक राइट हायर हो रहा है. सो हायर करने के टाइम कल्चर एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, स्किल्स अनदर एलिमेंट है, एक आदमी का एटीट्यूड इम्पॉर्टेंट. सो देयर आर कपल ऑफ पैरामीटर्स जिसके बेसिस पे हम हायरिंग करते हैं, और इसमें से एक कंपनी कल्चर आता है. सो मेरा कहना है, अगर एक बंदे को हायर करना है कंपनी के लिए, तो इसकी 3-4 इंपॉर्टेंट चीज़ें देखें. एक, विलिंग टू लर्न, विलिंग टू बी सेल्फ मोटिवेटेड टू ग्रो. ओके, ये इम्पॉर्टेंट है. तीसरा, तब तक वो शांत नहीं बैठे कि सही काम नहीं हो रहा है. नहीं आना एक बात है, और इंटेंशन के नहीं करना वो अलग बात है. तो ये 3-4 चीज़ें अगर हम देखेंगे ना, तो स्किल बिल्ड हो सकती है, मगर ये एटीट्यूड नहीं बिल्ड हो सकता है. तो ये एटीट्यूड बिल्ड करना, या ये टाइप के एटीट्यूड के लोग को हायर करना, ये एक फंडामेंटल इंपॉर्टेंस रहेगा. और वही जनरली एक कल्चर कंपनी का फिर डिफाइन करना शुरू कर देता है कि यहाँ पे जो भी लोग काम कर रहे हैं उनका इंश्योर है कि लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है. तो लर्निंग इज़ अ कल्चर. आज लोग लर्न नहीं करना चाहते हैं, वो प्रोबेबली लर्न ओनली बाय द वे ऑफ फेलिंग. तो ये एक तरीका है भले, बट दैट्स नॉट द राइट वे. ये 3 चीज़ें हैं मेरे टेक के लिए. वाओ. सो आई वांट टू गो एंड ऐड ऑन टू दैट लिस्ट. मैंने अभी कहीं तो पढ़ा था कि 3 मेजर फैक्टर्स चाहिए और 3 मेजर लोग चाहिए व्हेन यू हायर. वन इज ऑब्वियसली द फाउंडर, एंड फाउंडर एक नहीं, मतलब देयर कैन बी मल्टीपल फाउंडर्स, देयर कैन बी रोल्स वेयर यू हैव मल्टीपल फाउंडर्स. और ये फाउंडर्स विजन रखते हैं कि कंपनी आगे 10 साल में या 5 साल में कैसे दिखेगी. सेकेंड इज द आर्किटेक्ट. ओके, सो द वन हु बेसिकली डूज द execution very properly, does the architecture, you can say the manager role, right, where he does the management very properly. He knows right resource or right timing kaun si hoti hai. And third is obviously the best, the team players who actually go and have, they are very curious in nature. Itne curious hote hain ki ab kya next, ab kya next, ab kya next. If you have these 3 qualities in one person, you should hire him or her. So this was my take on, like, if you want to hire in a startup, right, आप अगर ये 3 चीज़ और ये 3 क्वालिटी है, एंड ओवर एंड अबाउ व्हाट यू सेड, वन थिंग, सबमिटिंग इट अप इज द राइट एटीट्यूड. अगर राइट एटीट्यूड है तो डेफिनेटली यू शुड हायर दैट पर्सन. सो या, दैट्स अमेजिंग टेक. आई हैव लर्नड वन थिंग फ्रॉम यू, इज लाइक, फर्स्ट गिव एंड देन डोंट एक्सपेक्ट. Things will come around you. So thank you so much for that learnings. And this is where my next question to you would be, what are the 3 things they should need, like they should at least have, so they can start with entrepreneurship? No, I think so. It's nothing to do now with Gujarati. As I said, the whole ecosystem is in place. So Right. You be from anywhere, any part of the country or world today. Entrepreneurship journey is very exciting. Very difficult to say 3 qualities, but हाँ, इतना मैं बोल सकता हूँ. Again, be ready to fail. Be ready to hear from people, यार ये क्या कर रहा है, ये ऐसा नहीं होता है, ये नहीं होता है. But otherwise, I think so. It's in you. You have your idea, and ideas work today, and it's working. I think Right. so. Everywhere we see startups are doing absolutely wonderful. So please jump into it. Wow, that's amazing. So whoever is actually trying to go for entrepreneurship, the best advice, if you are ready to fail, आपको देरी नहीं करनी चाहिए. Go for entrepreneurship. Right, and that's feed by Dhwani, right? So thank you so much for that advice. So my next question to you would be like, AI, right? AI is everywhere. सब जगह AI चल रहा है. For you, the question is how AI is replacing the HR practices, and how you as a company, are coping up with, and in next 5 years, how do you envision that? AI has already been there now. I think so. Everybody is feeling AI. They're using it right from एक मदर बच्चे के प्रोजेक्ट्स के लिए एआई यूज़ कर रही है, से लेके ऑफिस में एक लेटर ड्राफ्ट करने के लिए एआई यूज़ हो रहा है. सो एआई है, लेट्स एक्सेप्ट इट. टिल द टाइम यू डोंट एक्सेप्ट, ना यू विल नॉट बी एबल टू एग्जिट टुगेदर, राइट? सो लेट्स एक्सेप्ट इट. 1, एआई विल रिप्लेस एचआर? नहीं. आई थिंक कोई भी टेक्नोलॉजी जो आई है ना, उसने खाली प्रोडक्टिविटी बढ़ाई है. Okay. राइट, नेम एनीथिंग फ्रॉम अ computer to your mobile phones to internet or anything, right? It has helped you improve productivity, your lifestyle. So it's improved. So AI will also help you.
It's yes, you have to use it wisely. AI ke we have seen already some challenges, and that's why global forums are already talking and developed countries are talking of regulating AI. Right. I'm sure they will take care of it. And always everything has two sides, right? You have the nuclear power to generate electricity, but while you use nuclear for some wrong reasons also. So AI overall I see is a win-win. It's going to make life easier, more productive, more creative now. Even a layman can all of a sudden become creative by using AI. So I think so it's a thumbs up. I don't see any challenge कि HR replace होगा. और HR ये वर्ड ही पकड़ लेते हैं ना, ह्यूमन रिसोर्स. तो हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं और AI की बात कर रहे हैं, तो ये कुछ मेरे को मैच ही नहीं लगता है. कुछ प्रोसेसेस ऑटोमेट हो जाएगी, ठीक है. एनीवेज वो एक ह्यूमन को कितना टाइम करना होता है, वो बोरिंग है. बोरिंग भी है. रोज मैं किसी का वो अटेंडेंस देखता हूँ और वो 5 मिनट लेट आया है, जल्दी आया है. राइट. आई थिंक सो कुछ एक्साइटमेंट नहीं है उसमें, राइट. सो एक्साइटमेंट नहीं है जो चीज़ में, वो AI कर लेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें. इनफैक्ट वो कंसिस्टेंटली तो करेगा, बायस नहीं होगा. आज के डेट में ह्यूमन है तो बायस भी हो सकता है कि भाई एक जन का अटेंडेंस लेट मार्क किया, एक का जल्दी टाइम पे कर दिया, राइट. सो इट हैज़ इज एडवांटेजेस. At Opportune, yeah, we are working on AI. In fact, the last release, what we did with a partner of ours, is the whole employee pulse management. So with help of AI, हम employees का organization में क्या pulse है वो capture कर सकते हैं in a very intuitive and psychometric way. Okay. Very, very exciting way. Simple short questions asked once in a week. 2 question, 3 question, even, and that's even anonymous, so that people are not hesitant to apply. Okay. एंड ये डेटा इकट्ठा होता है एंड इसके बेसिस पे एनालिटिक्स रन करते हैं एंड देन इट गिव्स यू कैटेगरी वाइज हाउ मच हैप्पी एन एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन, हाउ वेल इज द टीम मैनेजर डूइंग, इसकी ग्रोथ कैसी है कंपनी में, कंपनी कल्चर भी यहाँ पे मैप हो सकता है, ये कल्चरली कैसे फिट हो रहा है. सो वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स आर कमिंग अप. द बेस्ट पार्ट नाउ वेयर वी आर यूजिंग AI इज नाउ हाउ डू वी हेल्प हिम इम्प्रूव. सो अगर एक एम्प्लॉय बोल रहा है मेरा विजिबिलिटी इश्यू है ऑफिस में कि आई एम वर्किंग हार्ड बट मेरा विजिबिलिटी नहीं आ रहा है, तो ये हमको सर्वे से समझता है साइकोमेट्रिकली. अभी इसके बेसिस में हम नजिस क्रिएट करते हैं कि आपको विजिबल होना है तो ये 3 चीजें कीजिए एंड दिस इज AI ड्रिवन. That's crazy. राइट. Okay. ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3. तो एम्प्लॉय एक ऑप्शन 1 सिलेक्ट करता है और वो बोलता है मैं ऑप्शन 1 में अभी मेरे मोर इंट्यूटिव और मोर इंटरेक्टिव होगा मेरे सारे ग्रुप सेशंस में. आफ्टर 8 days AI फॉलोज अप कि आफ्टर ट्राइंग दिस इज देयर अ चेंज, इज इट वर्किंग फॉर यू और नॉट, एंड इट कंटिन्यूज इन दैट लूप. एंड प्रोबेबली इन 3 weeks आइदर आपको ये सोल्यूशन मिलता है या आपको पता है अभी क्या करना है. सो ये AI कर सकता है. ये एक ह्यूमन करने के लिए, वो भी सोचो एक 25 एम्प्लॉय की कंपनी में तो हो जाए, बट 500 एम्प्लॉय की कंपनी में कैसे करोगे आप? हाउ विल यू रीच टू एवरी इंडिविजुअल, राइट? सो AI is wonderful. Why not? Use it in the right way. Wow, that's an amazing input. I would love to know. मुझे तो सही में जानना है कि what are the different applications of AI in HR, and this comes to the a question which comes in my mind also many times, right? हम जब MBA, when we were going for our MBA, right? And this is related to HR and careers. I mean, how can you build HR as a career, right? When you take your MBA, right? You find, first of all, you have only 3 boys and you have like around 60 girls in that class, right? And सबको ये लगता है HR क्या करता है? अटेंडेंस करता है. HR क्या करता है? बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करता है. So this is the best time, I want to know from you, and what is your reply towards that, and how can we make sure that HR, because it's the most, for me now, I know it's the most important function in any company, and if you crack that right, everything is sorted. So what is, according to you, like how can we not change the mentality, but how can we influence, right, in the right way? So what is your take about HR? As you rightly said, बहुत important है. It's very important. There is no second thought. And if you see the journey of any revolution in any country, when they grow, it was industrialization and now it's services, right? Industrialization में it was blue collar people. Okay, वहाँ पे भी HR important था क्योंकि they have to come on time, and hence जो पुराना concept अभी भी है कि time keeping, right? But now it's services. Services में important is work to be done, right? Of course at the right time. बट इट्स नॉट दैट इट शुड स्टार्ट एट 9. वहाँ फैक्ट्री 9 बजे शुरू करनी पड़ती है क्योंकि प्रोडक्शन प्लानिंग होता है. आपके 9 जन आए और एक ने आया जो बटन ऑन करने वाला है फैक्ट्री का, तो 9 जन की प्रोडक्टिविटी खराब हो गई, राइट? सर्विसेज में इंडिपेंडेंट चीज़ें चल रही है, सो वहाँ पे फ्लेक्सी आवर्स चलते हैं. सो या बेस्ड ऑन द इंडस्ट्री, डोमेन,
lot of things company has to decide what practices they want to implement. So this is very, very important. You can't copy paste it from anywhere. You spoke about women also, right? You know, women are very powerful and hence they are in HR. आपके घर पे भी आपको मदर देखते हो, सबसे पावरफुल वो है. They have emotions but they have discipline. और यही एक HR की इम्पोर्टेंस है, तो जो उनके पास नेचुरली है. राइट. एक मैन देखोगे तो दे आर ऑलवेज ऐसा होना चाहिए, बट इमोशन लेवल क्वोशंट कम है. इट्स नॉट देयर, बट Yeah. क्वोशंट कम है. ओके. राइट. सो वुमेन्स आर डिफॉल्ट HR. ओके. राइट. एंड हेंस यू सी दैट. ऑफ कोर्स अगेन ट्रेडिशनली देयर वर इश्यूज कि वुमेन को एक सिट जॉब चाहिए था, डेस्क जॉब चाहिए था करके ज़्यादा थे. बट टुडे इट्स नॉट लाइक दैट. टुडे यू सी इक्वल देयर ऑल्सो. मतलब जनरली हम इक्वालिटी की बात वुमेन के लिए करते हैं, बट अंडर HR ऑल्सो यू सी CHROs हु आर फीमेल, CHROs हु आर men also. Men So also. Yeah. I don't think so that's any more relevant now. It's all Okay. about your skills and expertise, how you handle things. So yeah. I mean, yeah, that's a amazing thinking, because now it's not just a job, it's a service business. Yeah. And service business में सबसे important है कि आप human emotion सबसे ज़्यादा पकड़ो. People management. Let's talk about that, right? So is people management still one of the most important skill to be an HR? Like, if you are very good with people management and if you're very good with understanding people, should one go for HR as a career, or you would say that, you know, there are other attributes or avenues towards it? Oh, HR now needs all skills. Okay. I think so days are gone जहाँ HR को खाली बस people management करना है. Right. मेरे ख्याल से HR तो सबसे important function हो गया है. ये इसके लिए नहीं है कि मैं HR में हूँ, मैं entrepreneur भी हूँ, right? सही है. So बिजनेस में HR की क्रिटिकलिटी बहुत इंपॉर्टेंट. HR शुड नो टेक, HR शुड नो प्रोसेसेस, HR शुड नो इवन अबाउट द कंपनी कल्चर, प्रैक्टिसेस, प्रोडक्ट. क्योंकि वो हायरिंग में जाते हैं, राइट? हायरिंग में जाते हैं तो आप टेक्निकल हायरिंग कर रहे हो, बोले वो टेक्निकल क्वेश्चन नहीं पूछना होगा. एट सम लेवल यू शुड नो एज एन HR कि प्रोडक्ट कंपनी में कैसे बनती है, क्या बनती है, हमको क्या लोग चाहिए. तो इनफैक्ट HR इज एन ऑलराउंडर. तो एक पॉइंट पे HR को जज करना, तो आई विल नेवर सजेस्ट या रिकमेंड एनीबडी. HR हैज टू बी अ all-rounder. People management is important because again it's with people you are going to do work, but you will need to know every department of the organization. Perfect. Yeah. So मैंने अभी actually recently when I was doing something in AI, right, and we had a client who wanted to create a similar sort of like a HRMS but leveraging AI. So you know the major SOP which was given by them was that the person who is building the application not only should be domain knowledge expert, like HR expert, but understand the AI and analytics very well. Yeah. So हमें तभी समझा कि you know now HR as a career will also have analytics, you know, not only advanced Excel, but they should also understand Tableau, right? Power BI. Yeah. They should understand maybe AI tools where they can leverage AI into building the processes. I think so. AI and analytics. You Right. spoke of both. Again, if you have done a little more research on this, HR analytics by itself बड़े courses है market में. So people are learning, upgrading their skills to HR analytics, and it's all data driven. So finally, it's all data. You know, you have to learn how to analyze it, and based on that, present it and work on it. Couple of simple use cases, right? With help of data for a BPO, we did 2 years back. Okay. We did a sampling of 2,000 employees. Okay. Their past data and their current data. And we found out that there were 2 areas where company could actually save a lot of dollars of money. Okay. One was training and one was retention. Oh, acha. So with data, we realized that people coming from a specific geography did not sustain longer. With data, we realized that people in a particular process did not sustain or retain for a longer time. And once we found out that, then we started deep diving into it to find out what was the problem. And we resolved, and we saved a lot of money on it. Wow. So data, very important, very, very important. And data मेंटेन करने के लिए ही ये टेक्नोलॉजी HRMS प्लेटफॉर्म चाहिए, जहाँ लोग कभी कभी रिलक्टेंट होते हैं, यार ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, मेरा जॉब चला जाएगा, पता चल जाएगा. बट इट्स नॉट दैट. लेट्स लुक एट अ बिगर पिक्चर. सो द बड़ा पिक्चर क्या है? कंपनी का ग्रोथ, या सेव मनी फॉर द कंपनी, हेल्प एम्प्लॉयज विद द डेटा हाउ दे कैन ग्रो इन द ऑर्गेनाइजेशन, देयर करियर पाथ. इफ दिस कैन हैपन ओनली इफ technology is in place, software is in place, data is in place, you capture the pulses of the employees. Hence we have built this employee pulse management system. Right. Gather all this, create
lot of analytical reports. So now we are able to do, analysis of whether is a right fit to hire or not. Okay. We can do analysis in terms of whether the person's tenure in the organization would be how long or short. Exactly. Right? In fact, we can do analysis how we can retain the good talent, how to identify the good talent, Mhm. and then how we can retain them. Right. Okay. So data analytics is very, very important, and HR has to know how to use it. So it's Wow. important. Perfect. मुझे पता है कि you have been mentoring so many startups. I have been mentoring so many startups. अब startups का सबसे बड़ा issue ये है कि they are always tight on budget. And they understand the importance of HRMS, या उनको नहीं पता कि HRMS क्यों important है. What would be your advice? जो HRMS afford कर सकता है, definitely they can afford it. But what would be your advice, or you can say hacks, or you can say the starting process for any startup कि वो HR को इतना ही importance दे, and they also start automating at first place. Startup ecosystem, good thing is these are all young generation people. So technology के बिना तो इन लोग आगे ही नहीं बढ़ेंगे. Okay. So 80% cases we have observed that they are ready to adapt to technology. Yeah, budget is tight. So what we say here कि cloud SaaS आपके लिए तो बना है, क्योंकि ये सब्सक्रिप्शन है. आपको कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट या कैपेक्स नहीं करना है. यू पे एज यू यूज. सो अब 5 एम्प्लॉय की कंपनी आपको 5 के लिए भरना है, आपको कोई 200 लोगों के लिए नहीं भरना है. सो टेक्नोलॉजी आपको एट अ वेरी वेरी पॉकेट फ्रेंडली प्राइस मिल रहा है आपको. ओके. ये अंडरस्टैंड कर लो कि ये बजट टाइट होने के बाद भी दिस इज वेरी वेरी अफोर्डेबल. ओके. हाँ, अभी ये कब शुरू करना ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. वन हो गया बजट, सो आई थिंक सो ऑलरेडी द मार्केट इज प्रोवाइडिंग यू SaaS, सो इट शुड टेक केयर ऑफ इट. राइट. कब शुरू करना है? सो हम अपॉर्चुन में और एक इनिशिएटिव करते हैं जिसको हम फर्स्ट HR कहते हैं. ओके. पर्सन और कंपनी वाज यूजिंग एन HR फॉर द फर्स्ट टाइम. तो इनके लिए मेरे पास एक छोटी सी की बुक भी है. ओके. सो उसमें हम क्या कहते हैं, एक कंपनी जिसमें 10 एम्प्लॉयज़ है उसको एक HR की प्रैक्टिस हैबिट में लानी है. उसके पास 10 से 25 आती है तो उसको एक प्रोफेशनल HR चाहिए पॉलिसीज और प्रैक्टिसेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए. और जैसे 20 से ज़्यादा होता है ना, वो मैनुअल काम नहीं हो सकता है, वो एक्सेल में नहीं हो सकता है. सो तभी आपको एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है. सो टिपिकली वंस यू आर outgrowing 25 numbers, you should take an HRMS software is my takeaway clearly. And this has been scientifically proven also that अब कोई भी कंपनी देखेंगे ना तो पहले 5-10 लोग तो क्या जनरली घर के आ जाते हैं, फ्रेंड्स एंड फैमिली आते हैं. इवन स्टार्टअप में फ्रेंड्स इकट्ठा हो जाते हैं, स्टार्टअप चालू कर देते हैं. सो वहाँ HR पॉलिसी की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमको सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी है कि हमको टाइम क्लॉक तो करना ही नहीं है. हाँ. HR की जरूरत कब होती है, जब एम्प्लॉयज़ एक्चुअली आने लगते हैं. हमको कंप्लायंस फॉलो करना पड़ता है, हमको देखना पड़ता है कि इसके 9 घंटे हुए कि नहीं, ज़्यादा काम हुआ तो ओवर टाइम देना है. तो तभी सॉफ्टवेयर तभी भी वो एक्सेल से हो जाएगा, बायोमेट्रिक मशीन से हो जाएगा. बट 25 के बाद ये मैनेज नहीं हो सकता है. देन दैट्स वेयर यू नीड टेक्नोलॉजी. ओके. पहले तो इंडिया में ओवर टाइम मिलता है? आई मीन हाउ मेनी कंपनीज आर एक्चुअली पेइंग ओवर टाइम? आई वांट टू नो दैट. ओवर टाइम मिलता है, यस मिलता है, ऐसा नहीं है नहीं मिलता है. बट ओवर टाइम के भी थॉट प्रोसेसेस अभी चेंज हो गए. सो ओवर टाइम पहले इट वाज ऑलवेज कंसिडर्ड इन कैश. अगेन मैं वो आई गो बैक, फैक्ट्री सेटअप, सर्विस इंडस्ट्री, राइट. फैक्ट्री सेटअप, लेबर पीपल, दे अंडरस्टैंड कैश. सर्विस इंडस्ट्री, पीपल अंडरस्टैंड काम करना है. इट्स नॉट हाउ मेनी आवर्स, इट इज आउटकम. इट इज ऑल आउटकम बेस्ड, राइट. So then it is rewarded in different ways. You may get flexi working hours, right? Okay, you may get comp off for overtime done. You may get overall rewards in some other way. So overtime has been at least considered. It's been observed, monitored. People know at the back of the mind he has done extra work or she has done extra work. It's just the way they acknowledge is different as per your industry, but it is there. So, yeah. So recently Narayan Murthy, commented on 12 hours work hour, right? I mean 12 hours work day. So like, what is your take on that? Because that's like a shocking thing from obviously a business leader, and I know what was his perspective of answering that. But like, what is your take? Actually, can we go like, because in Germany I have seen they have got 4-day work week, right? In India there is 6 days work week, or now there are many companies who have gone with 5 days work week. So क्या आप मानते हो कि 12 घंटा काम करना चाहिए या 8 hours is like the perfect time? Okay, so let's start with, he is the leader, right? Yeah. He's a thought leader. He's a thought leader. So probably there is a thought behind something what he's trying to say. It's that people may have not interpreted it correctly, yeah. Right? So it's probably interpretation. 70 hours, technically yes, technically no, right?
एज एन एंटरप्रेनर तो आई एम श्योर आप 70 से ज़्यादा करते हो, उसमें कोई सोचना ही नहीं है, राइट? बहुत ही बढ़िया. एंड एज एन एंटरप्रेनर यू वांट एवरीबॉडी टू वर्क Well, विद योर सेम वेवलेंथ, सेम स्पीड, जो प्रैक्टिकली होना नहीं है. True. So it's again more important is at what stage of your work, what stage of your life, what stage at your career, and how much fuel you have to put into your time is something, is your personal decision. I don't think so company will be able to rule or regulate it कि किसी को mandatory 70 hours करना है. Probably the intention is more, आप young हो, you can do more time. Right now your other priorities are not there. Your priority is work. Right. So why not put time and invest time in work is, I think so, the more intention side of it is. And it's not from a policy side, it has to be a 70-hour policy. So, No, yeah. my take on this is कि out of 70 hours, right, 30 hours तो आप अपने आप को दो for learning. Your personal growth should be there in the workplace. अगर आपको काम में मज़ा आ रहा है, अगर आपको काम और curious बना रहा है, काम में आपको basically इतने आप, you know, you're involved into it and you are doing it the best, right, then it will definitely be your career high. So it's not on the number of hours, it's basically how much time you're investing in yourself. So that was my take when he commented on this thing. I think he's expecting people to grow in the organization by themselves rather than, you know, somebody else, you know, not only always 24 hours training them, but, you know, training yourself. Yeah. And, you know, this is where, you know, you and me are collaborating on, right? So we want to obviously not only HRM is obviously one way, you know, you can help automating, like you can help companies to automate their processes, but you also want to give them learnings, you also want to give them education, you want to also, you know, save their time on training. So what if, you know, there is like the new skill set which are coming in that industry is passed on by HRMS, right? HRMS, like what if there is something which provides training in the SaaS model itself? So yeah, I mean, thank you so much for the collaboration on that also. My next question to you is a very interesting take. ChatGPT, right? So have you heard about it? Yeah. So, I mean, I'm very sure you know that the candidates have become smart, but even HR have become smarter. Like, I don't know the word, but HR are more smarter than the candidates now. So the candidates goes to the ChatGPT, put the job description of the LinkedIn, and they paste it on their resume, right? And then tell ChatGPT convert it according to the ATS friendly or something like that. So how are HR coping up with that? I want to know from that end. Yeah, it's been a lot of such use cases. Right. And if end to end it's automation, yeah, it becomes sometimes very tricky. So either candidate has found a hack to how to bypass the layers of this intelligent systems on the ATS. And hence, as a process in hiring, it's still important that we do a face-to-face interview or a video call interview. Okay? Oh, okay. And that's where you get to know that the candidate has put in the right information as per the knowledge he or she has, or it is just generated by some AI tool. So it is possible. It needs a little skills from the HR interviewer because you need to ask really some type of counter questions. Okay, your question 1 and question 3 could be countered, and then that's how you'll get to know that whether the candidate has actually worked on the skills, they have the skills, or they just written it on the CV. This has happened in past. So with AI, it's just become easier, right? Earlier, people used to copy a friend's CV. Right. And trust us, when you go on campus interviews, you get almost the same CVs. I've seen the names are also same. So yeah, you have to have an eye on it. So it's absolutely possible to catch them. Wow, that's great. I mean, I'm very sure, guys, he's also using a AI tool to understand कि resumes AI driven है कि नहीं. You know, from my end, right, I have been training at many colleges and universities and, you know, top A schools in the country right now. हमने यही basically message pass किया है कि अगर आप, let's suppose, you know, you're applying for a video editor job or you're applying for a UI UX job, right? You need to make sure कि आप एक assignment, you know, which maybe a company can give you, but before you reach out to the company, you complete that assignment. How can we make sure that, you know, the top firms in the country or top companies in the country, right, have that time, right, to make sure that, you know, they can afford each and every one. So because I believe it is more about timing also, right? Because the timing in edtech, in specifically because I'm coming from that domain, 2018 was booming, and 2021 things are going in a different way because there are many other factors. So I'm very sure it is happening in fintech. It is happening as a startup ecosystem.
सो हम वो टाइम स्पैन जो बोलते हैं एवरेज टाइम स्पैन एम्प्लॉय स्पेंड्स इन अ कंपनी, राइट, उसको इंक्रीज कैसे कर सकते हैं? व्हाट इज योर टेक इन दैट? Yeah, two factors here: employee and employer both. So as an employee, they are Gen Z, as you said. So Gen Z needs things to be moving very fast. So as an employer, you need to also cope up. You need to give them a roadmap, clear goals, clear visions. Okay. Yeah, and I'm sure they will progress. They give them the right framework, right work culture, right environment. Give them the right hand holding, and they should be able to do it well. And that's exactly the same way employer is expecting from an employee. So once I give you the complete infrastructure to do and perform, excel well in the company, you have to perform to that. And if you don't perform, then we know that it doesn't work. So it's a mutual on both sides. And if that's done with the right chemistry, then the span can easily increase. So it's about the right amalgamation. Right. And if that is done, then I think so we can easily increase the span of an employee in an organization. ओके, सो अभी हमने इतनी सारे हैक्स की बात करी ली है, सो मुझे आपसे जानना है, गिव मी लाइक 2 टिप्स और 2 HR हैक्स व्हिच यू वुड लाइक टू शेयर, लाइक एनी ऑटोमेशन टूल्स और समथिंग व्हिच यू वुड नो लाइक पीपल आर यूजिंग. सो एक टैलेंट एक्विजिशन में टूल है रिज्यूम फॉक्स. इट मेक्स योर लाइफ वेरी इजी. जैसे डेस्कटॉप पे 100 CV पड़े ना, ड्रैग ड्रॉप कर दो एंड इट विल ऑर्गेनाइज इट विल डू CV पासिंग, इट विल कैप्चर द skills, it will capture your name, and in fact with the JDs which skills are relevant, it will match and even categorize it also. Wow. So very nice, effective, simple to use tool. So that's one tool, Resume Fox, for y'all. Then there is StackBy. There's a tool called StackBy that can be used for a lot of your document management, document sharing processes. So it's very simple to use tools, so that can be used. So this is 2 tools. While there are CRM tools like vTiger, which are open source in nature, so that can be used again for your sales and customer relation management. If you're looking at a little premium, then Jira is well known everywhere. So we're using Jira at our office. So Wow. couple of such tools are available, and a lot of companies are building it. I just said 2 or 3 tools which we are using. So this Jira is a project management tool, right? Yeah, ticketing system, project management. For software companies, they can do sprint management. So a lot of things can happen using Jira. That's amazing. Yep. So personally now, do you believe in work from home or work from offices, like the coolest thing now in the town? Work from home 100% तो होगा ही नहीं. Human, we are social animals, so we have to go out. So that's for sure. I think so the term evolved is hybrid now. So things will work hybrid, and it's good, I think so, because it's giving a balance. जो काफी टाइम से बोल रहे थे work life balance होना चाहिए था. So people can at time work from home, and then when and how required they can come to office and they can deliver. So hybrid is what my take is. Hybrid is the perfect. No, I mean, I believe the same. Hybrid is something which can be giving flexibility to all the employees. Employees खुश भी रहते हैं, and then whenever they want to work from home and learn from others, वो भी हो जाता है. I don't know कितने जन ने देखा है, मगर Amazon पे एक सीरीज आया था अपलोड्स करके. हाँ. और अगर अपलोड्स नहीं देखा है तो श्योरली देख लो. एंड आई थिंक सो हमारे ये पूरा जो आज का कॉन्वर्सेशन हुआ, AI, टेक्नोलॉजी, ह्यूमन, it's one of the best example or illustration how both coexist. So great use of AR in that, AI in that, and it's amazing. Well, I don't want to promote or propagate, but since we spoke about it, Uploads is a watch everybody should look if you are interested in technology. Okay, I would say that AI is definitely evolving how HR is going to be there in next 5 years, right? The roles are changing, as we discussed in the podcast. Today, you might be in the talent acquisition role, you might be in the operation role, you might be in maybe payroll role, right? As a profession. But tomorrow, majorly the operation work can be automated, but there will be jobs which will be created by AI itself. And you will get a role where you have to evaluate that which AI model in HR is going right or going wrong. So this is going to be the next future roles which are coming in the industry. So do understand it, and you can upskill and make sure that you grab each and every opportunity. Thank you so much to stay till the end. I'm very sure आपके लिए content valuable जरूर होगा. Hit the subscribe button right now and tell me कि मुझे कौन से guest को बुलाना चाहिए मेरे अगले episode में. You can comment down below and stay tuned till that time. See you in the next episode.